बस मैं फिर बंद करूँ। हेलो अंकित, स्टार्ट हो गया। आ गया, देख लिया। Yes, good morning all. Welcome to another webinar based on this Java. Today we are going to discuss about the applets webinar, which is basically a application of our Java, means another form of our Java program, that is your Java applet. So yes, students, we are going to discuss with this Java applets. What is the major objective of studying the Java object is learn how to develop Java program that interact with user through a web browser. So first of all, important thing is that in this type of Java programming is that we have to interact through the web browser only, not with the desktop. So what is an applet? What is an applet? Applet is a Java special class that does not run in DOS window. So major important thing is what? That I have to execute my program on browser. First of all, first thing is been remember about the Java applet is that it is going to be execute through the browser, not through the DOS of our Windows. It runs in a browser window, web browser, client window, in a window on a HTML page. So first of all, for Java applet, we must have a HTML page because our web browser is always understand only the HTML document. So what is important into it? Java has security features to keep the applet from acting like a virus on the client machine. So security feature of Java basically make the things whatever been downloaded from the internet, because the browser, this applet is been open into the browser. So whatever we are downloading, my system will work as a it's treat it as a virus. So on client machine it will be actually stored in a separate folder. So now we have to discuss about the difference between the two different application of our Java programming. So Java programming is basically supported standalone machines mode as well as browser mode. So if we are talking about the standalone machines or standalone application, these applications are basically our Java application, named as Java application, and for that we don't require any other software. For example, we don't need any browser. We need only JDK, that is compulsory. JDK we require plus JVM we require, means these two things. JDK is a Java development kit and JVM is Java virtual machine, that both are required to execute an Java application program. These are also required in the case of applet as well. So JDK plus
JVM is also required here, but plus one web browser is also required for executing our applets. So this is important for applets. Java applets compile Java class files. It run with the web browser or from anywhere on the internet. But there are some security restriction. As I had already told that there are security means if we download from our web browser, my system will treat it as virus. So in the case of applet, because we are actually downloading it from the web browser, so the chances of coming as a virus is more. So my JVM treat it as a virus and keep it separate from our system. So applet versus application, if we find some differences between the applet and application. So as in application, first of all you must understand my applet means applet is actually provide us a graphical user interface. As my application, if we will talk about the Java application, for application graphical user interface, we have to import frame. We have to use frame for graphical user interface, because application is basically itself by default it is being called as CUI. But if we want to implement graphical user interface in my Java application, then I have to import frame and then I have to start working. In case of JApplet as the name is indicating that applet is web browser class. So it is by default GUI. So we don't need to inherit frame. Another difference is use of int init versus constructor. In Java application, if we create a class, we have to create constructor. But in case of applet, this init function is called to initialize all the settings. So there is another difference that our application support constructor, but our applet support or use init function to initialize the parameters or variables or settings. Another important difference is use of main. In application, my main function is used. To write any code. But in applet, we don't use any main. So no use of main in our applet. In application, default layout is border layout
and in applet it is flow layout. So border layout means if we draw a screen, every component is being created in the border format, border layout. And flow layout means whatever the input controls has been inputted, they comes one sequence another, and as soon as if the right margin is arrived, the control will be shifted into the next line. So this is flow layout. And for the security purpose, applet requires security, but application don't require, because application means that you are working onto the standalone machine, and for applet you are working on browser, and browser means that it is vulnerable for bugs or viruses. So security is required in applets. It's not so much required in application because it is not exposed to the network. Now, if we discuss about Java applet, then there is another major important comparison is between Java applet and a JavaScript. They both are similar, but there are some difference definitely. So what the Java applet, what is the difference between the Java applet and JavaScript are? First of all, Java applet is created by the Sun microsystem, while the JavaScript is being created by the Netscape Navigator. Netscape Navigator is a browser name, but Netscape is a company name, and Sun Microsystem is another company name which is actually developed Java, and they also developed Java applet, because Java applet is a part of our Java programming language. Java applet standalone application developed out of HTML. So applet we have to create separately. We have to compile with the Java C compiler, and then we have to embed its class file into HTML. While we talk about JavaScript, that JavaScript is automatically, or it has been in actually defined in HTML code only. Means there is difference. Java applet first of all been compiled by the Java compiler, and whatever the dot class file is there, it is being embedded into the HTML. But JavaScript is being actually write into the HTML code only. So there is a difference. Must be converted into machine language before it can be run on the web. But it is a text-based, JavaScript is a text-based. It does not need to be compiled, because whenever we will execute our HTML code, it automatically compiled by the browser and then been executed. While in Java applet, first of all, we have to write our source program. It has been compiled into the dot class file, which is called as the bytecode, and then it will be embedded into our HTML code so that it can be actually open into the browser. So Java applet, once it is compiled, it is set, have to go back to the original text and alter it, then compile it again. If you are creating any Java code, then definitely if you want to do some modification, you have to modify it, you have to save it, and then compile it again. While in JavaScript, if you can alter it, it runs and run it again and again. So because it is opened onto the browser. Now Java basic concept: source code converted to bytecode, bytecode to machine code of JVM, because this is the major concept of Java programming. First of all, source code has been converted into the bytecode. Bytecode, which is a machine independent code, or this makes Java as platform independent. So the bytecode is been
converted, bytecode is been converted into the object or machine comfortable code through the JVM and been get executed. So bytecode is converted into the machine code of JVM, and each real machine must have own JVM. For what the JVM do, it do the interpretation, then it will do the just-in-time compilation. JIT is just-in-time compilation, and then send to the execution. Next is capabilities and limitation of applets. So we have to discuss, of course, if we are talking about the applet, then there are some capabilities. Definitely, there must be some limitation of also. So first of all, build full feature graphical user interface. It is suitable for web. This is a capability of applet. Then communicate over the internet to a host server. Support the client server architecture, means if we execute our applet, it always been it can be opened to the internet, and if it is internet, then it will be hosted onto the server and the client can access it for communication. Another is communicate with other applet on a form, so we can communicate with the other applet as well. Then environmental neutral means no platform is required, because every machine is having its own browser, and this is the capability of applet, that it can be get executed on any browser. So environmental neutral is the capability of this applets of Java, but there is a limitation that it is having a security, and Java applet should be ensure the client's security, because it is executing onto the internet, and so the internet definitely vulnerable with the viruses, bugs, trojans, etc. So client security is being ensured by the applet. Next topic is applet inheritance. How actually applet being get inherited from the base class to the last class. So base class, cosmic base class is object. This is we know, if we are talking about the Java application as well, the object class has been already inherited by default. Then component classes should be inherited. For example, if we use buttons, if we use list box, the component classes should be inherited. Then container, if we are taking any container, see, suppose I want to create a frame. So I have to create a dialog box. Let's suppose this is my dialog box and I want to create some buttons on it. For example, there is a button 1, B1, button 2, B2. So this is my dialog box. So container class is been required, button class is been required through the component. Suppose I want to create the list box. So list box is been inherited from the list box class. So different components has been required and different classes will be inherited. Then panel, we can create a panel as well on this dialog box. So if I want to create a panel, then I have to use the panel class, which is used to create a sub window or group of window. So we will take the example for that as well.
Yes. Let's suppose we have a frame. This is my dialog box. On that I had created a panel. And in this panel is gender panel. So related to this gender panel, I have 3 radio buttons. For example, one is for male, female and other. So this is a panel. This is my dialog box. This is my panel. Or we can say it as sub window, which is having group of buttons. Group of buttons means it is having different radio buttons. So applet is the another class which is used to create a small application which will be web enabled. And I have to derive any user defined class from this applet class to create my own applet. So this is the another topic, how you have to create a Java applet step by step. So there are some steps which we will discuss. What they are, first of all, we have to write the Java applet source code. So how we can write a code? Of course, some coding is there. First line is, it's showing import java.applet. So we have to discuss it. Import command, it is a command, Java is a package applet is a sub package. Applet is a class. In the same manner, another statement is import, again command, Java is a package, AWT is a sub package which is having a graphics class. So if we are talking about the applet, then definitely there should be some graphics included into it. So the graphics class is a class which is makes our applet graphical. So AWT full form is, AWT is abstract
AWT full form is Abstract Window Toolkit. So we have to import another class, graphics class, which belongs to the AWT sub package and in the Java package. Then public class hello world applet. This is my class name, user defined class name. Now I am inheriting this hello world applet class from my applet class. This applet class exists in java.applet package. Now we have to use this paint function, which is used to draw any string, any image onto our applet. So public void paint, this is the syntax of our paint function. Public void paint, it is taking the object of graphics class, and this is a object of graphic class G. G.drawString is drawing a string hello world, and this is a location, means coordinate, x and y coordinate. So hello world will be display on the coordinates 50, x, 50, 25. So x coordinate is 50 and y coordinate is 25. Now when we create this program, we have to save it with the name, any name you can take, because we had taken class name here hello world applet. So we will take the source code name as hello world applet.java. So you have to save it with the extension Java. Then after saving the code, what you have to do? You have to compile it with the Javac compiler. First step is you have to write the Java code. Second step is you have to compile it using Javac compiler. Next step means first step writing the source code. Another is compiling it. Third is, now when you compile your program, it always create a class file which is called as bytecode. So whatever the file name .java extension is there, it always create a class file with the same name, but the extension will be .class. So HTML code is there. We have to write in HTML code to call the applet. So HTML code has been written, HTML./HTML. Rest of the things is upon you. You want to give it or not. But we have to give the applet tag in which we have to specify code attribute, and the code attribute will be consisting of the .class file name. In our example, hello world applet is my file name with Java extension. When we compile it, we get the hello world applet.class file. I had been setting it width equals to 250 and height equals to 22. This is the height and width of an applet which has been shown into the browser, and then save it with the name of any name, a.html or whatever. Save it and open this HTML file in a browser to execute it. So there is 4 steps. One is writing a source code, then second is compiling the Java source code to the bytecode.
Then you have to create an HTML code. HTML code is embedded the applet tag having the bytecode file name, and then we have to save this file with the name of with the extension of .html. Name can be anything, and then we have to open that HTML file into the browser to run it. So these are the steps to create a Java applet. So whatever we had written, this is my hello world 50,25. So I will get an output like this, in which hello world will be written on 50,25 coordinates. So this hello world comes into the onto the coordinates of 50 and 25. Now we are going to discuss another example of the Java applet. Again, the same thing is there. Import java.awt.star means we are going to inherit all the classes which is available into the AWT subpackage of Java. Then we import the applet class from the applet subpackage of Java. Then we create a class, public class hello from Venus extends applet. Now use public void paint graphics G. There are various functions in graphics class. So for accessing these graphics class methods, we are declaring an object of dimension class. Dimension will give you the size of the applet, whatever the applet is being created onto the screen in your web browser. Now want to set the color of our background, that is g.setColor. So it will set the background color. For setting the background color, this is the method g.setColor. G is an object of graphics class and setColor is a method of this graphics class. But now if you want to set any color, then you have to use the color class dot the color name. So color is a class in Java. Dot orange is a color name. Then g dot fill rectangle. For rectangle, what we have to give? For drawing a rectangle, if this is my rectangle, we need to give this point, that is 0, 0. Then we have to give width, means total width. That width comes from this dimension, and then height. So fill rectangle. We had set the color as orange. So this rectangle will be filled with the orange color. Then for setting the font, we had used a method of graphics class, that is set font, in which we had created new font sans serif font.bold, and its size has been set as 24. There is another method g.setColor, new color 255 10, 0. In the previous example, we had set color
by taking name, but in this method we are taking the RGB for color, setting the color. Then we draw the string hello from Venus, a Mars colony on a particular x and y coordinate. If you want to draw an image, we have to use g.drawImage function and getting the image venus.jpg and then put it onto the our graphics or hello. Next, same we have to create an HTML source code for embedding the dot class file of applet. It is as same as the previous one. In this HTML code we had mentioned the head, then we had set the body color as well, then given the code, and then applet code equals to hello from Venus dot class. This is my previous class name, and dot class is an extension of it. Here I am mentioning the hello from Venus.java. That is my source code. So that will also be displayed onto the screen. So now what the elements we had used into the Java applets are: superclass is java.applet, means applet is a superclass. Then javax.swing.japplet. We can also extend our applet from japplet, that is called a swing component. Applet comes from the AWT package, while the japplet comes from the swings package. We don't require any main for this. We have to paint all the canvas of our applet. Applet tags are code, width, height. These are the tags which we use with the applet tag. These are the elements which we use into the Java applets. Then we have to run applet using either the applet viewer or through the web browser. Applet viewer, then filename.html. Either you have to use it. Applet viewer, that is a actually utility which is available in JDK. And open page from browser, you can open this page into the browser as well, because it has been saved with the name of .html and our browser understand HTML. Now another important topic of applet is applet lifecycle, from where the applet will get started and where it will get destroyed. Our applet has been started. Major events in the lifetime of an applet are initialization, means when the applet get the initialization, then it will get started, then we have to paint, then we have to stop, and then destroy. So these are the basic methods which is been comes under the applet lifecycle. The methods defined applet class except the paint in the java.awt.container. All the except paint has been actually declared into the graphics class. Rest, init, start, stop, and destroy, they all are been declared into java.awt.container class. So first of all, applet lifecycle. First is init. It informs applet that it has been loaded into the system. Function of the init
init method of our applet class. It called only once. As soon as your program or your applet is been initialized, it is called once. An idle place to initialize variables and create UI objects. If you want to create or initialize any variables, we have to do it into this init method. So if we talk about the application, this job we do into the constructors. Then start, as soon as it is initialized, it is get started. So execution is been get started. Then right after init is been called. Each time the page is loaded and restart, this start function will be called. Paint graphics, when an applet dies or it is terminated, the following sequence of methods calls takes place. Stop, it informs applet that it should stop its execution, and or either you have to stop its execution or you are closing your web browser. Both call the stop method. Destroy, it informs applet that it is being reclaimed and that it should destroy any resources that it has allocated. So if you want to destroy some methods or you want to release some resources like threads, etc., then the destroy method can be explicitly called. Otherwise, it has been called itself when you close your browser. It is also called once only when the environment determines that your applet needs to be removed completely from memory. The stop method is always called before destroy. First of all, you have to stop your browser, stop your applet execution, and then you can destroy. No guarantee that this method will completely execute it. So Java Virtual Machine take care for this, destroying the applet. So this is my life cycle graphically. As soon as applet is loaded into the memory, it is born, means initialization function is been called, and the initialization is called, the start method will be get executed. From start method, my applet comes into the running phase, and from running it can be go into the idle stage by using the stop method, or it will be get started again by using the paint method or start method again. And from start method it comes into the running state, and in running state it is having the paint method. So display it again and again, or either you have to stop, and from idle state it can go from the running to the running state, as well as it go to the dead state by calling the destroy method. And as the dead browser has been there or dead applet is there, it will means end of the applet or the exit of the browser. Order of calling: init, then start, then paint. It will be do all the things, then stop, and from stop we can go and start it again, and from stop to destroy. But if we reach on to this destroy, we cannot go back onto the paint. Paint method it can also be called by repaint method. There is another method is named as repaint, so it can be repainted. So this is public void paint graphics, which we had already discussed. There are some other methods which has been used into the applet. So that's all about this applets in our Java application. So I am giving a recap for the whole Java applet. Java applet एक्चुअली एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन होते हैं. इनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, जावा प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि वेब ब्राउजर एप्लेट्स के बारे में बता रहे हैं हम. एप्लेट्स जो हैं वो हमारे वेब ब्राउजर के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जावा जो हमारा एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है वो हमें दो तरीके के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है. वो होते हैं एक एप्लीकेशन और एक एप्लेट. जो एप्लीकेशन होता है वो हमारा स्टैंड अलोन मशीन पे काम करता है. सो जावा का स्पेशल क्लास होता है विच
एप्लेट जो है वो जावा का एक स्पेशल क्लास है जो कि डॉस की विंडो पे रन नहीं होता। ये एक वेब ब्राउजर के ऊपर रन होता है और बस इसका एक फीचर रहता है कि सिक्योरिटी फीचर जावा इसको ध्यान में रखना पड़ता है इसको, क्योंकि जब भी कभी आप ब्राउजर के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वायरसेस या ट्रोजन्स या और भी बग्स जो होती हैं वो हमारी क्लाइंट मशीन पे डाउनलोड हो जाती हैं। तो जावा को इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हमारी जावा एप्लेट हम बनाते हैं तो इसकी जावा की जो जेवीएम है वो एक अलग से सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हमारा जो जावा एप्लेट है वो भी सिक्योर हो जाता है। दो तरीके के एप्लीकेशन होंगे, एक जावा एप्लीकेशन हो गया और एक एप्लेट हो गया। एप्लीकेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड लोन मशीन पे रन करता है, इसके लिए मुझे कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मुझे सिर्फ ऑफ कोर्स हमें जेडीके और जेवीएम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जावा एप्लेट के लिए हमें जेडीके और जेवीएम तो चाहिए ही, साथ में हमें एक एप्लेट व्यूअर या एक ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एप्लेट वर्सेस एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लेट जो होता है वो हम अपनी क्लास जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए एप्लीकेशन के अंदर हम जे फ्रेम यूज करते हैं या फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन एप्लेट में हम एप्लेट को एक्सटेंड करते हैं बाय द एप्लेट क्लास। और जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन में कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं, वैसे हमारे पास एप्लेट्स के अंदर इनिट मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं। और हमारे पास एप्लीकेशन में मेन मेथड होता है, लेकिन एप्लेट में हमारे पास मेन मेथड नहीं होता। हमारे पास एक पेंट मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने एप्लेट को ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिफॉल्ट मैनेजर जो होता है एप्लीकेशन में वो बॉर्डर लेआउट होता है, लेकिन एप्लेट में वो फ्लो लेआउट होता है। एंड सिक्योरिटी फीचर इज डेफिनेटली एडिशनल इन एप्लेट। There is some difference between the Java applet versus the JavaScript, क्योंकि JavaScript HTML में लिखी जाती है, इसलिए ये थोड़ी सी डिफरेंट है। नाम से इंडिकेट करता है कि ये जावा के जैसी ही होगी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जावा एप्लेट जो है वो तो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाए थे, और जावास्क्रिप्ट जो थी वो नेटस्केप वालों ने बनाई थी। और जो जावा एप्लेट होते हैं वो हमारे अलग से बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन अलग बनाया जाता है और उनको हमें HTML के अंदर डालना होता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट होती है वो लिखी ही HTML कोड के अंदर जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि HTML कोड के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जबकि जावा का एप्लेट जो होगा वो हम लिखेंगे तो नोटपैड पे, उसको सेव करेंगे .java से, कंपाइल करेंगे तो डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, और उस डॉट क्लास फाइल को हम HTML फाइल के अंदर लोड करेंगे। उसके बाद हम इसको मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, और लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं करना पड़ता। और जावा एप्लेट एक बार अगर हमारा कंपाइल हो जाता है तो वो हम बार बार उसको, अगर हम कोई भी अपडेशन करते हैं तो हमें उसको सेव करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा। जबकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो जैसे ही आप अपने ब्राउजर के अंदर पेज जो भी लिंक आपने दिया होगा उसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। ये कुछ जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बाइट कोड होता है जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और मशीन कोड जो है वो हमारे को इंटरप्रिटेशन, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, ये तीन चीजें प्रोवाइड करती है जो हमारी जेवीएम होती है। कुछ कैपेबिलिटीज हैं हमारी एप्लेट की, कुछ कैपेबिलिटीज हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या कैपेबिलिटीज हैं? एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, एंड ये वेब के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट टू ए होस्ट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। थर्ड इज कम्युनिकेट विद द अदर एप्लेट्स ऑन ए फॉर्म। एनवायरमेंटल न्यूट्रल होता है क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि जावा एप्लेट के अंदर हमारे को क्लाइंट सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ती है। एप्लेट की इनहेरिटेंस जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट होता है। जितने भी जावा के प्रोग्राम होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड होते हैं। लेकिन उसके बाद फर्दर हमारे पास अगर हमें कंपोनेंट चाहिए तो हमें कंपोनेंट जैसे बटन है, लिस्ट बॉक्स है, इन सबको इनहेरिट करना पड़ेगा। कंटेनर, अगर आप कोई डायलॉग बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसको आप कंटेनर क्लास से इनहेरिट करोगे। अगर आप पैनल, कोई छोटा सा पैनल सब विंडो बनाना चाहते हो पूरी विंडो के अंदर, तो आपको एक पैनल क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा और उससे ड्राइव करना पड़ेगा। और सिंपल एप्लेट क्लास तो आपको इनहेरिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, स्मॉल एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि वेब एनेबल होगी।
और माई एपलेट हमारी अपनी यूजर डिफाइंड एपलेट की क्लास होती है, जो कि सारे के सारे एपलेट के पैरामीटर्स को इनहेरिट करती है फ्रॉम द एपलेट क्लास। ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया java.applet एंड AWT ग्राफिक्स। AWT फुल फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, जहाँ से हमें ग्राफिक्स नाम का एक क्लास मिलता है जो कि बेसिकली हमारे पेंट में यूज होता है। पेंट मतलब जो भी हमारा पैनल होगा, कैनवस होगा जो हमारा एपलेट का, उसको पेंट करने के काम आएगा। तो हमारे पास जावा जो हो गया वो तो हो गया पैकेज, एपलेट जो है वो हमारा सब पैकेज है, और एपलेट जो है वो मेरी क्लास है। और सेकेंड इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास इंपोर्ट तो कमांड होती ही है, देन जावा एक हमारा पैकेज है, AWT एक सब पैकेज होता है, और ग्राफिक्स जो होती है वो मेरी क्लास होती है। अब हमने क्या किया, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड एपलेट एक्सटेंड किया एपलेट के थ्रू। एपलेट मेरी डिराइव्ड क्लास है जो कि ऑलरेडी बेस क्लास है। बेस क्लास जो एपलेट मेरे सब पैकेज के अंदर अवेलेबल है। और पेंट एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने ग्राफिक्स को यूज किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू हमने ड्रॉ स्ट्रिंग किया। ड्रॉ स्ट्रिंग में 3 पैरामीटर दिए। पहला पैरामीटर जो स्ट्रिंग आपको ड्राइव करना, डिस्प्ले करना है वो, फिर उसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट हमने स्पेसिफाई कराया। तो सबसे पहला स्टेप जो था, तो हमने सोर्स कोड लिखा। अब उसको कंपाइल कर दो, जो जावा सी से कंपाइल करते हैं, और उससे कंपाइलेशन से हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है जो कि बाइट कोड कहलाता है। जब बाइट कोड बन जाता है तो उसके बाद आप उसको HTML कोड में डाल दो। HTML कोड में डालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है HTML और एपलेट, उसके अंदर कोड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वहां पे आप अपना इसका स्पेसिफाई कर दो नाम। उसके बाद उस एपलेट की विड्थ एंड हाइट को सेट कर दो, और हमारा एपलेट जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा और HTML क्लोज हो जाएगा। इस फाइल को आप .html के नाम से सेव कर दो। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसको एपलेट व्यूअर के थ्रू चला सकते हैं, या फिर आप अपने ब्राउजर में भी इसको ओपन कर सकते हैं। HTML फाइल को ब्राउजर में ओपन करना है या एपलेट व्यूअर से, तो आपको कुछ आउटपुट ऐसा सा दिखेगा, जिसमें हेलो वर्ल्ड हमारा स्ट्रिंग था जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था, और 50 और 25 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे हमें इसको प्लेस कराना है। तो ये हमारा एक कंपाइलेशन हो जाएगा हमारे पास जावा एपलेट का। ये एक अनदर एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने थोड़ा सा डायमेंशन क्लास का यूज किया है, जो कि हमें एक पूरी हमारा जो भी एपलेट जहाँ ओपन होगा उसका डायमेंशन प्रोवाइड करेगा, उसका पूरा साइज बता देगा, क्या विड्थ है उसकी, क्या हाइट है, वो सब उसके अंदर डी के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने कलर सेट करना है। 2 तरीके से आप ग्राफिक्स, जो हमने जी ऑब्जेक्ट लिया है ग्राफिक्स क्लास का, उसके जो 2 कलर को सेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो आप बाय नेम कलर सेट कर सकते हो, या फिर आप RGB जो कॉम्बिनेशन है उससे भी आपने कलर को सेट कर सकते हो। तो सेट कलर इज एक मेथड होता है। कलर एक क्लास है, उसमें आप या तो कलर का नाम ले सकते हैं, या फिर आप RGB, दिस इज 255 इज R, दिस इज 10 इज G ग्रीन, एंड B मतलब ब्लू, ये सारे कोऑर्डिनेट्स के साथ आप कलर को सेट कर सकते हो। जो हमारे ऑलरेडी बाय नेम्ड कलर होते हैं वो तो सेट कलर्ड होते हैं। 18 कलर हमारे देता है हमारा ब्राउजर, वो 18 कलर्स फिक्स्ड होते हैं। ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, सियान, ग्रे, इस टाइप के कलर्स होते हैं। तो ये आप ब्राउजर में से देख सकते हो सेट कलर नेम्ड। अब तो थोड़े ज्यादा भी हो गए हैं, लेकिन फिलहाल पहले 18 ही थे। बनाया फिल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स देना होता है, जहां से हमारा रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है वो, और उसकी टोटल विड्थ कितनी रहेगी और हाइट कितनी रहेगी वो हमें देना होता है। तो इस तरह से हम उसमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हमें इमेज डालनी होती है तो हम ड्रॉ इमेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद HTML का सोर्स जो था वो हमारे कोड था, वो हम इसके अंदर एम्बेड कर देंगे और हम इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। या तो एपलेट व्यूअर के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसका फाइल का नाम एक्सटेंशन जो होता है वो .html होता है, तो ये ब्राउजर में इजीली ओपन हो जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एपलेट लाइफ साइकिल। इसके मेजरली चार मेथड होते हैं, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। बट पेंट हमें बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब हमारा एपलेट स्टार्ट हो जाता है तो जो भी उसका कैनवस ओपन होता है उसके अंदर जो भी हमें ड्राइंग करनी है या जो भी हमें लिखना है वो सब हमें पेंट मेथड के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास इनिट जो होता है वो इनिशलाइज करने के लिए होता है, स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है। जैसे ही हमारा एपलेट मेमोरी में आता है तो वो इनिशलाइज होता है, और जैसे इनिशलाइज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेथड कॉल हो जाता है।
स्टार्ट मेथड के बाद ये पेंट मेथड को कॉल करता है, क्योंकि उसको जो भी ड्रॉ करना है या डिजाइन करना है वो सब पेंट के थ्रू होता है। और जब हम अपने ब्राउजर को क्लोज करते हैं तो सबसे पहले स्टॉप मेथड कॉल होता है, और स्टॉप मेथड के बाद डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है। तो ये इसकी सीक्वेंस रहती है। अगर ये फंक्शंस हैं इसके, क्या इनिट क्या करेगा, इट इन्फॉर्म्स एप्लेट दैट इज हैज बीन लोडेड इनटू द सिस्टम। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्म करेगा कि सिस्टम में लोड हो गया है। इट इज कॉल्ड ओनली वंस, एक ही बार कॉल होता है ये लाइफ में। जितनी देर एप्लेट चलता है एक ही बार कॉल होता है। उसके बाद अगर हमारे को इनिशियलाइज कराना होता है कोई भी वेरिएबल हमें इनिशियलाइज कराने होते हैं, तो हमारे को इसको इनिट में ही कराने चाहिए। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट मेथड होता है। जैसे हमारा इनिट मेथड कॉल होता है, ये हमारा स्टार्ट मेथड को कॉल कर देता है। इनिट के बाद स्टार्ट मेथड कॉल हो जाता है। स्टार्ट मेथड जो होता है वो बेसिकली इनिट के बाद कॉल होता है, एंड जितनी बार हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, जैसे आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, वो आपका रीस्टार्ट होगा। देन पेंट फंक्शन, वो पेंट फंक्शन जो भी हमारे को कॉल कराना होता है, जो भी पेंट कराना होता है, वो सब हमारा पेंट के ऊपर आ जाएगा, पेंट के मेथड के थ्रू कॉल होगा। उसके बाद हम जब हमारा एप्लेट टर्मिनेट होगा तो ये स्टॉप फंक्शन को कॉल कराएगा, और स्टॉप फंक्शन को कॉल कराने के बाद ये डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करा देगा, सो दैट कि जितने भी रिसोर्सेज आपने इस एप्लेट के लिए लिए हों वो रिलीज हो जाएंगे, और आपका जो मेमोरी होगा वो फ्री हो जाएगा। ये हमारी लाइफ साइकिल रहती है। लाइफ साइकिल में सबसे पहले बिगिन होता है, बॉर्न होता है हमारा एप्लेट। उसके बाद जैसे बॉर्न होता है वो इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज मेथड को कॉल करता है, इनिट मेथड को। उसके बाद इनिट मेथड में जो भी इनिशियलाइजेशन होगा, वेरिएबल इनिशियलाइज कराने होंगे आपको, वो सब कहाँ पे आ जाएगा, इनिशियलाइज होगा। उसके बाद आपका जो स्टार्ट मेथड को कॉल कर लिया जाएगा। जो स्टार्ट मेथड होगा वो आपका उसको रनिंग फेज में भेजेगा। रनिंग फेज से आपका जो एप्लेट है वो या तो आइडल स्टेट में जा सकता है, या और आइडल से वो डेड स्टेट में जा सकता है। तो आइडल स्टेट से वो वापस स्टार्ट रनिंग फेज में आ सकता है, लेकिन अगर आइडल स्टेट से वो डिस्ट्रॉय या डेड स्टेट में चला जाता है तो वो वापस नहीं आ पाएगा। तो ये एक सीक्वेंस रहता है। तो हमारा मेथड्स आर कॉल्ड इन दिस ऑर्डर: इनिट, स्टार्ट, then paint will be called for the painting of the things, and then stop, and last destroy function will be called. उसके बाद हमारे ये कुछ और मेथड्स होते हैं, एप्लेट के मेथड्स, जो कि रीपेंट है, अपडेट है, शो स्टेटस है और गेट पैरामीटर्स है। ये एडवांस एप्लेट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए जाते हैं। So for today, I hope everything I had made clear about the applet. So we will discuss advanced applet into the next webinar. So thank you all for being with me and understanding the things. Thank you.